Hello and welcome back to my channel. So in the last video, which was episode number 1 of hashtag in Neha's Closet, I told you about my wardrobe favorites or wardrobe essentials which were Western. Now in this video we are going to be talking about ethnic wardrobe essentials. In today's video specifically I am going to be speaking about regular wear में हम ethnic या इंडियन जो स्टाइल है हमारा वो कैसे और बेटर कर सकते हैं, कौन से ऐसे पीसेस है जो आपको अपने वार्डरोब में मिनिमल रखने ही चाहिए, एंड अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट हाउ टू स्टाइलिंग दोज बेसिक पीसेस विल कम. सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. Without wasting any further time, let's begin. And the first ethnic essential that I feel जो हम सभी को पता है वो है कुर्तीज. आपके पास जितनी कुर्तीज हो उतना कम है, but I'm going to talk about some basic pieces which are never going to go out of fashion. Okay, first category of kurtis is plain kurtis. Now, why do I say plain kurtis are a must have? Because उस एक plain कुर्ती को अगर आप बहुत सारे डिफरेंट ओकेजन्स पे सिर्फ एक्सेसरीज या दुपट्टा या लेगिंग्स ये सब बदल के पहनेंगे, सो इट विल ऑलवेज लुक लाइक अ डिफरेंट आउटफिट एवरी टाइम. इफ यू वांट टू नो हाउ टू स्टाइल अ प्लेन कुर्ती इन 6 डिफरेंट वेज, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक राइट हियर. आई विल लिंक माई वीडियो. उसमें मैंने एक रेड कुर्ती स्टाइल की है इन 6 डिफरेंट वेज. सो या गो एंड चेक दैट आउट. ऑलवेज इन इंडियन वेयर, एज अ कुर्ती लवर, एज अ कुर्ती पर्सन फॉर ऑल माई लाइफ, आई हैव जस्ट फिगर्ड आउट के बेसिक कलर्स में इन्वेस्ट मत कीजिए कुर्ती में. ऑलवेज गो फॉर ब्राइट कलर्स, different colors that suit you. Okay, so that was all about plain kurtis. Now let's move towards the next category, which is chikankari kurtis. Okay, why do I say that those are a must in your wardrobe? Because from the simplest to simplest girl to most of the celebrities, anybody and everybody is rocking chikankari kurti these days. So I insist कि आप एक कलर की तो एटलीस्ट ले आइए. So let's move towards. Okay, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत गर्मी है, इसलिए मैंने मेरे बांध दिए. So कुर्तीज के कलेक्शन में प्रिंट्स आर अ मस्ट. ओके, लाइक यू सी द कुर्ती दैट आई एम वेयरिंग, इट हैज अ नाइस प्रिंट. ऐसी प्रिंटेड कुर्तीज का फायदा क्या होता है, इसके साथ आपको कोई भी दुपट्टा या कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज पेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है. जस्ट अ स्मॉल लिटिल इयरिंग एंड प्लेन लेगिंग्स ऑफ गोल्डन और समथिंग एंड यू आर डन. So prints are always a good idea when you are buying kurtis. Okay, so let's talk about bottom wear now. Okay, bottom wear में I'll tell you कि leggings का fashion अब मुझे थोड़ा faint होते हुए दिखता है. I don't see a lot of people wearing kurti and leggings nowadays. What I see nowadays is कि कुर्ती के नीचे लोग प्लाजोस पहन रहे हैं, कुर्ती के नीचे लोग जीन्स पहन रहे हैं, and I think it looks totally amazing and also comfortable at the same time. So if you are an office going girl like me and आपको मेरी तरह बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ता है या कुछ, तो उसमें आई गेस प्लाजोज आर रियली नाइस बिकॉज दे आर रियली एयरी एंड दे आर रियली कंफर्टेबल फॉर यू टू वर्क थ्रू आउट द डे. ऑल्सो जीन्स फॉर दोज गर्ल्स हु आर गोइंग टू कॉलेज और समथिंग लाइक दैट, जिसको ड्राइव करना है, जिसको बस में चढ़ना उतरना है या व्हाटएवर. सो जीन्स आर रियली कंफर्टेबल ऑप्शन इंस्टेड ऑफ द लेगिंग्स. और उसके अंदर पॉकेट्स भी होते हैं, सो योर फोन एंड ऑल इज वेरी हैंडी. सो या Palazzos may also, I'll tell you to go for basic pieces like black palazzo or a white palazzo or contrasting palazzos that go with almost every kurti. तो आपको हर कलर का palazzo इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. You just pick out the basic shades and you are done with it. जीन्स में तो आपको पता ही है, आप कोई भी तरह का जीन्स पहन सकते हैं कुर्ती के नीचे and you are good to go. Okay, now let's talk about dupattas. Okay, dupattas are also a must-have in your wardrobe when we are talking about ethnic essentials. Okay, most of you will not wear dupattas on a regular basis like me because वो बहुत hassle होता है उसका. But if you want to invest in dupattas, my recommendation will be that invest in one bandhani dupatta, one Banarsi dupatta and one dupatta which has a nice border, maybe silver or golden according to your preferences and according to what dresses you have in your wardrobe. So I think that ये 3 दुपट्टे आपके पास जरूर होने चाहिए. Now as you can see over this picture, I have styled bandhani dupatta, green bandhani dupatta with an orange kurti. Now green और orange मतलब वो orange कुर्ती में कहीं पे भी कोई भी green नहीं है, but I have still matched the golden border of the dupatta with the golden
border of the kurti. So that's how you can mix and match colors even if you don't have a particular color in that kurti. So also bandhani dupattas can also be styled very nicely with plain kurtis. Okay, next let's talk about Banarsi dupatta. Okay, I chose this black because it was looking very nice. So you can choose colors according to your choice, but I think a red Banarsi dupatta or an orange Banarsi dupatta will look amazing and will go on literally every job. Okay, the last type of dupattas that I will suggest you that you have is a dupatta with a nice border. Okay, like you can see in this photograph, there is a nice bright blue color dupatta which has golden border in it. Actually ये दुपट्टा मेरे एक लहंगे के साथ आया था. वो लहंगा तो खैर ओकेजनली मैं पहन सकती हूँ, बट बिकॉज ऑफ द गोल्डन कलर ऑफ द बॉर्डर वो किसी भी और कुर्ती के साथ मैच हो जाता है जिसमें हिंट्स ऑफ गोल्डन है या ऐसे कुछ भी. सो प्रेफर टू बाय दुपट्टाज, नाइस दुपट्टाज विद गोल्डन बॉर्डर्स इन इट. Okay, now let's talk about skirts. कुर्ती के साथ ना भी पहनो तो ऐसे टाइप ऑफ एथनिक स्कर्ट्स look really good on T-tops and T-shirts or western wear. So you can create a nice Indo-Western look or a Bohemian look with these kind of skirts. So, okay, another important category is a kurti dress or an ethnic gown. Okay, if you are going to office or something like that, you can always prefer a wala midi length kurti dress, which will be really comfortable for going to office in summers, or if you are going to a family function, or if you want thoda ethnic if you want, you can go for a maxi length kurti dress. My preference is in summers, please invest in a nice kurti dress which will make you look stylish all summer long. Okay, so the final category is saris. Now saris is a very broad concept, and I know a lot of you don't wear saris on a regular basis, but I still had to talk about it. I just wanted to tell you that आपके wardrobe में अगर आप ये इतना ज़्यादा saris नहीं पहनते हैं, but still always invest in a plain sari. Also not color specific. Invest in a nice plain sari which is not so heavy on your body, which you can wear almost everywhere and which you can style in 1,000 different ways. Okay, so the final category is ethnic jackets. Now ethnic jackets, why did I tell you? Because ethnic jackets are so versatile that normal t-shirt or jeans के ऊपर भी if you add a ethnic jacket and you wear oxidized earrings, you are good to go. It creates such a beautiful bohemian look. I request you that you must buy a ethnic jacket which you can style with kurtis or kurti dresses or jeans and tops and everything. Okay, so that's it for today. I hope you like the second episode of hashtag in Neha's Closet, and I will see you in the next video. Till then, आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं. मैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा active हूँ. और अगर आपको 15-20 seconds के outfit inspo देखने का शौक है, then please go and follow me on Instagram. I will link my Instagram handle in the description box. And also अगर आपको मैं या इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, then please subscribe to my channel. We are very close to hitting 500 subscribers now. And I want to hit the 500 mark real soon, so please hit the subscribe button, and I will see you all in the next video. Till then, keep smiling.